हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। शायद आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। आज हम लोग वहीं से फिर से क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। सो बोर्ड पे शायद आप लोगों को दिख रहा है व्हाट इज़ लैंग्वेज, और इसकी मैंने थोड़ी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एकदम बेसिक सेंस को दिमाग में रखते हुए। सो लैंग्वेज इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन विद द पीपल. This is also a process just to express your feelings, your emotions, and this is also a media just to open your ideas and thought in front of someone. इसी बात को हिंदी में अगर हम लोग वर्णन करें तो बोल सकते हैं कि ये एक मीडिया है, प्रोसेस है, तरीका है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की बातों को, अपने भावनाओं को, अपने सोच को लोगों को सामने रख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज के बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं. तो यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वह लैंग्वेज इज जस्ट अ प्रोसेस, एज आई सेड अबाउट, लाइक दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस, बट ऑलवेज रिमेंबर लैंग्वेज इज ऑलवेज स्पोकन थ्रू सेंटेंसेस. जैसे कि हमेशा हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के जरिए ही हम लैंग्वेज को, कोई भी भाषा को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. लेट्स सी एग्जैक्टली ऑन द बोर्ड हाउ अ सेंटेंस हेल्प्स अस, और व्हाट इज सेंटेंस इज ऑल अबाउट दैट हेल्प्स अस टू make an appropriate language. So though there are different sort of definition about this sentence, is given in the different books and all. अलग अलग किताबों में अगर आप कभी देखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन जो है, उसकी जो परख है, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है. बट आई जस्ट ब्रॉट अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल लाइक नोटिफिकेशन फॉर यू अबाउट लाइक हाउ कैन वी एक्चुअली get an idea about the sentence. So sentence is what? A proper way integration of words where there will be a group of words or an integration. Integration signifies about the combination or assemble of words which actually sits, that maintains a proper order. We have to put it right in a proper order. We just can't like write it or just put it right here to there all the way according to our wishes. We have to put it on a proper order. And lastly, that definitely makes an appropriate significant, or it brings an appropriate meaning of it. It means इसका एक मतलब आना चाहिए. बिना मतलब के अगर आप कुछ भी डालेंगे वो सेंटेंस कभी नहीं कहलाएगा. वेल, इफ आई जस्ट डिस्क्राइब इट थ्रू अ प्रॉपर एग्जांपल, आई एम जस्ट राइटिंग अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड. जस्ट लुक एट इट केयरफुली. सपोज इफ आई राइट राजा इज अ गुड बॉय. सो if you just read it properly, it finds an appropriate flow. Means Raja is a good boy. This is very proper. It sounds very nice. It's soothing. But if you just write the same sentence like that way, a good Raja boy is. Now read the sentences. We have all that 1, 2, 3, 4, 5 words right in the first sentence, and second sentence we have put the same words. A 1, 2, 3, 4, 5. Again we have the same 5 words, but they are not in a proper order. Means here writing Raja is a good boy in the first sentence, it's a proper, as it brings an appropriate. This is a correct sentence or a proper sentence that we can write about this. Or in the second sentence, a good Raja boy is. So this is not a proper sentence. This is not a proper sentence. This is not a sentence, but this is an appropriate sentence, because the sound of the sentence and of course the arrangement and order in both the sentences are not equal. The first sentence which is in a proper order, and the second sentence though we also have the same words but we haven't actually ordered it in a proper way. So this is not considered as a sentence. Let's move to the next segment. Now we are coming down to the content of sentences. Now we have understood exactly what is a sentence. So sentence is a meaningful event, as I said about. Now we are coming down to the contents, mean the elements of sentence. So sentence is generally divided into two parts. That this is very visible on the board: subject and predicate. So always remember this. Every sentence has got two different parts. We call them subject and predicate. Now coming down to the next segment. So definition of subject. Now different sort of definition are given in the different books about the subject, but there is a very easy tips for you. So that has been written already on the board. About whom or about what we talk or discuss. We talk or discuss in a sentence is called the subject. Means in a particular sentence, if there is a sentence, if you talk about whom, you talk about what, that particularly, and you get an answer, we call this an appropriate subject. Suppose there is some examples that I've just put right. Ajay is my classmate. Tiger is a wild animal.
English is a funny language. So there are, you can see on the board, there are 3 different examples I've given already just for your conveniences. Now look at this. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? As I said about, like आप सवाल करोगे किससे या कौन, तब आपको एक आंसर मिलेगा. So in the first sentence, Ajay is my classmate. So if you ask who is your classmate, so you'll just get the answer, Ajay is my classmate. Similarly, you say about tiger is an wild animal. Who is a wild animal? You get an answer that tiger is a wild animal. And similarly, what is a funny language? You get the answer that English is a funny language. It means we can get all the answers properly. So in a sentence, about whom or about what we talk or discuss is called the subject of the sentence. This is very simple and easy for you. शायद आप सभी को समझ में आ गया क्या है. अब आगे चलते हैं, देखते हैं contents of subject. Subject के content, you know about the meaning of content? Content means वो किन चीजों से बना हुआ है. We call is content. So subject के 2 content है generally that also is visible on the board. The first one is called noun and of course the second one is a pronoun. Both of them are very indispensable part of speech. I guess you all have read about the parts of speech in your school days. फिर से वही चीज हम उसको दोहराने वाले हैं, जानने वाले हैं और बेहतर तरीके से. So शुरू करते हैं about the subject. First noun and the second one is a pronoun. Let's learn a little bit more about the noun and pronoun now. So the heading is right there on the top. What is noun? It suggests name of anything that has an existence in this cosmos. Means noun always signifies about naming words. Means whatever has a name in this entire universe, let it be whatever, but it should have a particular name. We call this a noun. कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जिसकी इस ब्रह्मांड में कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस हो, उसकी एक पकड़ हो, कुछ भी नाम, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, उसे हम नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपके लिए दिया है आपकी सुविधा के लिए कि ह्यूमन, एनिमल, फ्रूट, vegetables, places, number, things, object, anything could be this. See, some people are there, fruits are there, places are there, vegetables, animals, an object, gadget, tools, कुछ भी बोल सकते हैं आप. जिसके भी कोई भी नाम हो उसे ही आप क्या बोल सकते हैं. जैसे ह्यूमन्स में आप बहुत सारे नाम हैं. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रवि, प्रकाश, विवेक, प्रीति, कुछ भी. फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल. इन प्लेसेस कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई. वेजिटेबल्स आप सभी जानते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स है. वी हैव पोटैटो, टमाटो, लॉट ऑफ थिंग्स. एंड एनिमल्स, लायन, ऑल दीज एलिफेंट. एंड ऑफ कोर्स इन गैजेट्स में आप कुछ भी, हाथी, घोड़ा, चेयर, टेबल, आप कुछ भी ले लो. एनीथिंग व्हाटएवर हैज अ नेम इन दिस एंटायर कॉस्मोस, इन दिस एंटायर यूनिवर्स, वी ऑलवेज कंसिडर दिस एज अ एप्रोप्रिएट नाउन. चलिए प्रोनाउन के बारे में नाउन की तरह ही थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं. So what is a pronoun? Again, to avoid the repetition of naming word monotonously in every sentence, we use this word. What do you mean by this? देखिए, इसका मतलब होता है, you know about this repetition, you mean कि कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, और उस चीज़ से अगर हम लोग निकलना चाहे, उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, ताकि वो बार बार एक ही जैसे नहीं सुनाई दे हमें. मीन्स इट साउंड्स वेरी वियर्ड, लाइक लिसनिंग टू दिस फॉर ओवर द टाइम्स. इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड जस्ट टू लाइक हियर इट फॉर लाइक मेनी टाइम्स. जस्ट टू लाइक कम आउट फ्रॉम दिस, वी यूज दिस appropriate pronoun in place of noun. Just to make you understand on a better way, I'm just going for an example. Just take a look on the board. Suppose I'm writing a sentence. See one thing. So Raja is a good boy. Raja lives in Kolkata. Raja loves chocolate. So there are 3 different sentences that you can see on the board right now. It sounds, every time if you just repeat the same word, Raja, Raja, it sounds very awkward. It sounds very monotonous. So we can do one thing. We can replace that particular word, as I said about, like just to replace the appropriate noun, we use this pronoun, right? If you write about the first sentence, so Raja has to be there because Raja is a noun. We are telling about that particular boy. So Raja is a good boy, and right from there, you instead of that Raja noun, you also can use this he, right, as a pronoun. And of course, so the sound, it sounds like it. He lives in Kolkata, and again the same thing, instead of Raja you also can say he loves chocolate. So it sounds like similarly, Raja is a good boy, he lives in Kolkata, he loves chocolate. It means we have replaced all that naming words of Raja with the appropriate
pronoun. I hope this example is at all clear to you understand about pronoun. Now we are just again coming back to our back slide. So here are some examples that I have already put on the board that somehow will help you just to get a little bit more idea about this. What are pronouns? So I, we, they, he, she, this, that, and literally we have myself, who, what, each, other. All these things are the proper example that can be replaced by the noun itself. ये सब चीज़ों के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में आज मैंने आई जस्ट गेट यू अ लिटिल ग्लिम्स अबाउट ऑल दिस, मैंने आपको थोड़ी सी झलक बताई इन सब चीज़ों के बारे में. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट इन डिटेल्स. जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे आगे वीडियो में मैंने बोला कि मैं आपको इन सब नाउन और प्रोनाउन के बारे में सारी चीज़ें और डिटेल में बताने वाला हूं. आपने हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबाना है ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे. अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स वगैरह है या फिर कोई सुझाव है आपका, ज़रूर हमें इनबॉक्स कीजिए ताकि आगे वाले वीडियो में हम आपको और बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे पाए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.